Hello and welcome to the ICIC YouTube channel. My name is Milan. Today I'm going to discuss on the most important article from today's The Hindu newspaper. Let's see the article at first. After flag NCERT to restore original dancing girl image. देखिए आर्टिकल बहुत छोटा है, but if you read the article properly and little bit in details, then there is a probability that in 2027 there will be a question from IVC regarding the past year experience with reference to past year experience. Let's see the question at first. Question number 72. The famous female figurine known as the dancing girl found at Mohenjo-daro is made of. This question was asked in 2025 prelims, right? This question was this simple. This is a simple question, and this is a basic NCERT based question. Okay, that is why we picked up this article specifically with reference to Mohenjo-daro and about dancing girl. So we have to know little bit in details. So what is the context? What is the context at first? Now, recently NCERT decided to restore the original image of a dancing girl figure in Mohenjo-daro in its class 9 arts textbook. That is the context. Now moving to the next concept about the dancing girl figurine. Now, iconic artifact of the Indus Valley Civilization. That is the very important key. We know ki each and every year ki from IVC, specifically IVC, one question asked from the IVC section, specifically political, economical, society, and technology, and as well as art and crafts. These are the broad sections, and one more is urbanization. Okay, one more is urbanization. So 1 2 3 4 5 6, these are the 6 more broad categories under IVC, from where UPSC can repeatedly ask different type question in different years, right? Discovered at the Mohenjo-daro, which is currently situated as the Sindh province of Pakistan, dated around to 2500 BC. It means it is a mature Harappan phase, right? Made of bronze. You have to remember to keep metal, keep bronze, and that question was directly asked in 2025. Ki the famous female figurine known as the dancing girl found at Mohenjo-daro is made of, answer is bronze. इफ अगर आपने ये वाला सवाल गलत करके आ रहे हो तो यू आर आउट ऑफ द रेस. मैं बार बार कह रहा हूँ कि ये बहुत ही लो हैंगिंग फ्रूट्स है, एंड यू शुड नॉट मेक मिस्टेक इन दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन. ठीक है. क्रिएटेड यूजिंग अ लॉस्ट वर्क्स कास्टिंग टेक्निक्स. अच्छा, 2017 में क्वेश्चन पूछा था प्रीलिम्स में कि यूज ऑफ आयरन टूल्स. ठीक है, इन आईवीसी पीरियड. दैट इज द प्योर रॉन्ग स्टेटमेंट, क्योंकि वी नो कि दिस इज द पर्टिकुलर एज ऑफ द ब्रोंज. हाँ, सिल्वर मिल सकता है, गोल्ड मिला है, बट आयरन टूल्स that is not the found in during the IVC. क्योंकि हम लोग जानते हैं कि आयरन जो है, आयरन मिला था ड्यूरिंग वैदिक पीरियड. ठीक है, लेटर वैदिक पीरियड, मोर स्पेसिफिक टू द स्पेसिफिक लेटर वैदिक पीरियड. ठीक है, तो ये वाला चीज आप लोगों को पता होना चाहिए कि किस टाइम पीरियड में कौन सा मेटल का जो डिस्कवरी हुआ था एंड ट्रांजिशन जो फेज था. Reflects advanced metallurgy and artistic skills of the Harappans. Okay, और ये वाला जो स्पेसिफिक पॉइंट है, ये वाला जो इससे मेंस का भी क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है. ठीक है, कि मेंस में तो ऐसे ही क्वेश्चन, एनालिटिकल क्वेश्चन थोड़ा यूपीएससी ज्यादा पूछता है कि किस तरीके का क्वेश्चन पूछ सकता है कि मान लीजिए आईबीसी का टाइम पे जो आर्ट एंड आर्टिफैक्ट्स था, अभी मॉडर्न टाइम पे किस टाइप का वो रिफ्लेक्ट करता है, कि जो आर्टिस्टिक स्किल्स किस तरीके का वो रिफ्लेक्ट कर सकता है, ये करते हैं. तो इस तरीके के सवाल आप लोगों को पूछ सकता है. तो यू हैव टू analyze in little bit analytical way, right? Now distinctive features, young female figurines in a confident position, जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो. अच्छा, इधर वो पिक्चर नहीं है. कॉन्फिडेंट पोजिशन, लेफ्ट हैंड ऑन द हिप एंड राइट हैंड आर्म हैंगिंग द फ्रीली. एडोंड विद द न्यूमेरस बैंगल्स जो है वो राइट हैंड में था, वो सिंबल ऑफ द हड़प्पन क्राफ्ट्समैनशिप एंड कल्चरल सोफिस्टिकेशन. Now coming to the next point about the Mohenjo-daro. This particular Mohenjo-daro asked many times since UPSC मेंस इन हिस्ट्री ऑप्शनल पेपर. स्पेसिफिकली जो मैपिंग सेक्शन होता है पे मोहनजोदड़ो के बारे में बहुत सारे मेनी टाइम्स पूछा गया. व्हाट इज द मीनिंग इज द माउंट ऑफ द डेड. ठीक है, located on the Indus River. That is very important. You have to remember. This is the all basic facts you have to remember. कि located on the Indus River.
डिस्कवर्ड इन 1920 बाय द राखल दास बनर्जी। इंपोर्टेंट स्ट्रक्चर क्या क्या मिला है कि मोहनजोदड़ो में, जैसे कि ग्रेनरी मिला है, ठीक है, असेंबली हॉल मिला है, ग्रेट बाथ, द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ग्रेट बाथ, एडवांस ड्रेनेज सिस्टम एंड सिटाडेल एंड लोअर टाउन। इज दिस ए यूनेस्को site? Yes, this is a UNESCO site and UNESCO World Heritage Site which was granted in 1980. The status was granted in 1980. And here is a sample MCQ question. You have just watch the video and try to attempt it and check your ability. Okay, and put your answer in our comment section. So these are the our important information regarding Mohenjo-daro and Dancing Girl. All right. Now we will moving to the our next topic, today's next topic. Okay. Thank you so much for attending the session. Thank you so much.